Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू राजेश, थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks return to winning rally after a day's pause amid sharp rupee appreciation and positive global cues. Rupee appreciates 73 paise against the US dollar and gold rises by 418 rupees per 10 grams in the national capital. डॉलर की तुलना में रुपए में भारी मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज। $1 की तुलना में रुपया हुआ 73 पैसे मजबूत और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 418 रुपए प्रति 10 ग्राम उछला। घरेलू शेयर बाजार में कल हुई भारी गिरावट के बाद आज फिर से लिवाली तेज रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला, जिसका अनुकूल असर निवेशकों के बीच देखा गया। भारतीय एयरटेल, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की अगुवाई में प्रमुख सूचकांक 0.7% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 273 अंक यानी 0.71% की बढ़त लेकर 38,901 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83 अंक यानी 0.73% बढ़कर 11,470 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी निवेशकों ने अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। BSE मिड कैप इंडेक्स 1.16% ऊपर उठकर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.54% की वृद्धि देखने को मिली। Bharti Airtel was the top gainer in the Sensex pack, rallying 6.4% after the Supreme Court granted 10 years to telecom firms for paying the adjusted gross revenue AGR related dues to the government with certain conditions. Bajaj Finance, Asian Paints, Tata Steel, NTPC and SBI were among the other gainers. On the other hand, ONGC, Axis Bank, Tech Mahindra, Infosys and ICICI Bank were among the laggards, dropping by up to 3.3%. BSE Telecom, Metal, Power, Healthcare, Basic Materials, Capital Goods, Utilities and FMCG indices surged up to 3.8%, while IT, Oil and Gas and Tech indices ended in the red. India's manufacturing sector activity re-entered the growth territory in August after 4 months, driven by a rebound in production volumes and improvement in customer demand following resumption of business operations, a monthly survey showed. The headline, seasonally adjusted IHS Market India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI rose from 46 in July to 52 in August. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आए सकारात्मक संकेतों का भी घरेलू निवेशकों पर अनुकूल असर देखने को मिला। खासतौर से चीन से आए फैक्ट्री उत्पादन के आंकड़ों से निवेशकों में काफी अभिरुचि देखी गई। इसके साथ ही अगस्त महीने में FIIs का निवेश भी ठीक ठाक रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम हमें आज के शेयर बाजार पर दिखा है। सुषमा जी, बाजार में आज कल भारी गिरावट हमने देखी, लेकिन आज ठीक ठाक प्रतिक्रिया रही निवेशकों की और काफी अच्छी कह लें कि कल की गिरावट के बाद आज ठीक ठाक बढ़त के साथ बंद हुए हैं शेयर बाजार। क्या रहे प्रमुख कारण? देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है, जैसे कि पूरे विश्व भर में स्टॉक मार्केट्स मार्च के बाद इनकी काफी बढ़ती हुई कदम दिखाई दे रहे हैं। बुलिश ट्रेंड सब जगह दिखाई दे रहा है और वो ज्यादातर इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे कई देशों में और जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी बहुत सारे देशों में सेंट्रल बैंक्स ने काफी सारा ये जो पैसा चीप फंड्स जो है वो रिलीज किए हैं और ये लिक्विडिटी की वजह से
ये जो FIIs वगैरह अब आ रहे हैं और ये फंड्स की वजह से ये इट इज बॉइंग अप द स्टॉक मार्केट। और दूसरी वजह शायद मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कि अगर बहुत सारे नए निवेशक भी आ गए हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है, हमारे देश में भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इसमें, और ये थोड़ी सी अजीब बात दिखाई देती है कि अगर आप देखें विश्व भर में कि जो आर्थिक स्थिति है हर देश की वो इतनी अच्छी नहीं है, स्टॉक में है। इसका जो कॉज है ये सेंट्रल बैंक्स की जो इस वक्त लिक्विडिटी है वो सारा पैसा रिलीज करें, क्योंकि उनमें इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। Okay, today Bharti Airtel was a top gainer in the Sensex SPAC, rallying up to 6.4%. That's pretty good, and this is particularly after the AGR-related dues that the Supreme Court granted 10 years to telecom firms. What do you have to say going forward? What is the future of telecom, particularly? Why is it that Bharti has gained quite a bit? What about the other? Vodafone, Idea? What about the other? The Supreme Court judgment, of course, says that they have given now a time period of 10 years for these telecom companies to pay their dues to the government. It is indeed a little strange that they have not acceded to the government's own plea for a 20-year time frame. Because given the fact that this is a commercial decision, one would have expected the court to take into account the requirement of the government. And having said that, the 10-year itself has given a lot of relief to the telecom companies. Between Bharti and Vodafone has a much larger amount to pay, about 50,000 crores, and Bharti Airtel has less. And secondly, Bharti Airtel is in a stronger, profitability and financial condition to pay these dues. So 10 years is a very comfortable period for Bharti. 10 years, however, for Vodafone is not such a comfortable position. They were looking for at least 15 years. However, even in the case of Vodafone, the reports are coming in that they are satisfied that this will at least ensure that they will not have to think of the option of closure, because this was one of the options that Vodafone Idea might have to close shop if they have to pay these AGR dues at one go. Also, it looks very likely that either the telecom companies or the government will go back to the Supreme Court for a review of this decision, given the fact that the government itself, as I said, wanted a 20-year time frame, and there is likely to be a review petition. So there is a possibility of relief, for further relief for Vodafone as well as for Bharti Airtel. But Bharti, as I said, is in a fairly comfortable position, which is why the stocks of this company have gone up just now. Okay. Though India recorded its worst GDP after yesterday's data, the silver lining is that the agrarian economy managed to post positive growth of 3.4% in the June quarter. Sushma, going forward, how can the government provide impetus to the agricultural economy so as to cover up the ground for the shortfall that the other sectors are causing? Well, I think actually the government has already given a fairly substantial package of agricultural reforms already, where they had talked about, reforms in terms of agricultural marketing, reforms in terms of agri-industries, giving a push to the dairy sector, to animal husbandry, to fish cultivation. So they have already done that. And I think it's very interesting that the agriculture sector is the one area that has given us positive growth of 3.4% in the GDP data. And even now, post-June, if you're talking about July, August also, the data indicates that the situation is going to improve even further because the reports are in that the Kharif sowing, the acreage has increased. There has been fairly sizable monsoon rainfall. And the data on sales of farm machinery, especially tractors, is extremely positive.
So these are all areas which are good, and going forward in the festival season, we look forward normally every year for the rural demand to pick up first, and then that kind of percolates down to the rest of the country. Of course, right now the situation has just been released, the official data. GDP data on other sectors has been really quite disastrous. But the silver lining, as you pointed out, is not just agriculture, but also the fact that these parameters have shown an improvement in June, July, and August. So we have to see going forward how quickly the economy is able to recover from the pandemic and the lockdown that occurred earlier. But this would have, in any case, been factored in by the economy and the market as such, because we knew that the demand was not there, the economy, nothing was working during the months of March, April. So all these factors were actually factored in already by the markets. Yes, we are just... As just a layman, you would have seen that, nothing was moving in April and May. I mean, there was no manufacturing activity, there was no trading activity, there was no transport activity. So clearly, the GDP would have gone down. As I said, even a layman could have told you that. The stock markets obviously have factored in this issue. Also, there were some agencies, although there was expectation of contraction, perhaps the expectation by most agencies was not so high. There were expectations of probably 15 to 20% contraction. However, you had one or two agencies like Barclays Investment Bank or ICRA Ratings. They had estimated or predicted that there would be at least a 25% contraction in the April to June period. So, as you rightly pointed out, this issue has really been factored in by the markets. सुषमा जी, हम आपका ध्यान यानी आपने जो कहा है उसकी ओर एक बार फिर से ले चलना चाहेंगे। आपने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में निवेशकों का रुझान एक देखा जा रहा है जो बाजार में लगातार निवेश कर रहे हैं। क्या हम ये समझें कि जो बाजार में लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसके अलावा जो बैंकिंग तंत्र में धन लगाने पर जो खासतौर से भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए कि वहां पर बैंकों में रखा हुआ धन चाहे जिस किसी तरह से रखा जाए उतना अनुकूल नहीं साबित हो रहा है, लाभप्रद नहीं साबित हो रहा है, तो ऐसे लोग जिनके पास धन है और जो लगातार निवेश करने की स्थिति में अभी भी हैं, बाजार में वो बने हुए हैं, बरकरार हैं और बाजार को तेजी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में अभी 1.5 साल से अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करता जा रहा है। तो ये तो हैं आपके रेपो रेट्स, जो लेंडिंग रेट्स हैं, पर साथ ही साथ आपके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो जो लोग ज्यादातर अपने पैसा, जो धन जो है बैंक्स में रखना चाहते हैं, समझते हैं कि सेफ है, लेकिन उनको अगर पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलता उसमें, तो वो धीरे धीरे करके काफी सारे लोग ये धन को दूसरी जगह में लगाना चाहते हैं। और इस वक्त रियल एस्टेट में लगाना ठीक नहीं है, वो भी बिल्कुल डिप्रेस्ड है। तो बहुत कम एसेट क्लासेस हैं। तो एक आपका इक्विटी मार्केट्स है और एक गोल्ड है। और गोल्ड को तो आपने देखा ही है कि सोने का भाव कैसे बढ़ रहा है। और इक्विटी मार्केट्स में कई लोग अब वहां पर उन्होंने शिफ्ट किए हैं और कई लाखों नए इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट्स खोले हैं अप्रैल में, जून में। तो यहाँ पर, और ये जो सिलसिला हमारे देश में दिखाई दे रहा है, वो अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है कि नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग एसेट क्लासेस ढूंढ रहे हैं और इक्विटी मार्केट्स में उन्होंने डाला। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का पैसा जो है, अगर आपने एंड मार्च या बिगिनिंग अप्रैल में एक स्टॉक मार्केट्स में डाला, जिस वक्त क्रैश हुआ था, आपने बहुत सस्ते में स्टॉक्स खरीदे होंगे और धीरे धीरे करके मार्केट बढ़ता गया, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो गया 2-3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद। तो इन लोगों को काफी फायदा हो गया। तो मेरे तो लगता है कि ये शायद जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए निवेशक हैं, शायद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहेंगे मार्केट में। तो ये भी एक बहुत यूनिक फिनोमेना है ये पैंडेमिक के वजह से। Okay, coming back to the way the markets behave today,
The sentiment was also supported after a private business a survey which I read a while back showed India's factory activity grew in August for the first time in 5 months as the easing of coronavirus restrictions spurred a rebound in domestic demand. So after agriculture, which we discussed, now manufacturing too is showing positivity. How robust will it remain in the coming quarters? As I mentioned, the data is showing that from the crash of April and May of all kind of economic activity, we were having a rebound in right from June onwards, and June, July, and August, and now this data that you are showing on the manufacturing sector is definitely very encouraging. The PMIs. Yes, the PMI, the data that you are talking about, the manufacturing survey is definitely very encouraging because in the manufacturing arena till now we had not got such positive data. On the other hand, you have had data showing that rail freight traffic has gone up in June, July, and August. You have data that e-way bills have gone up. Now, e-way bills reflect the movement of road transport carrying commodities. So indicating that economic activity is slowly getting back to normal. Electricity consumption has risen nearly to 90% of what it was last year. So these are the indicators that are showing that the economic activity is getting back to normal. In the case of manufacturing activity, the survey that you have quoted, that is indeed very crucial because we are looking for an increase, step up or revival in manufacturing activity because it will provide sustainable jobs. Workers who were in these factories, who had gone home, are now getting back to these factories and are now hoping to resume their livelihoods. And these companies, once they start these industrial projects, once they start manufacturing, they're bringing goods into the market. We are hopeful that this whole cycle, the business cycle, will resume once again. So these are all important indicators. This does not mean, of course, that the next quarter, which is July, August, September, is certainly going to have an increase in GDP. You're still going to have probably a contraction in GDP growth in the next quarter, and the revival will probably start in the third quarter. सुषमा जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो प्रवासी मजदूर या कह लें मजदूर जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो अपने घर की ओर लौटे थे, वो घर की ओर से वापस फिर अब अपने काम के स्थान पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर है कि उनकी वापसी बहुत हद तक हो गई है। अगस्त महीने का जो आंकड़ा आया है, सर्वे आया है, कह लें IHS मार्केट इंडिया का जो PMI आया है वो 46 से 52 हो गया, यानी जुलाई में 46 था, अब ये 52 हुआ है। हम उम्मीद करें कि विनिर्माण का हब बनाने की जो कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, लगातार कहे जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं निवेशकों को, उस दिशा में हम अब आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। ये सारे इंडिकेटर्स तो यही दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है, लेकिन वापस आ रही है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप बिजली का कंजम्पशन देखें, बिजली का 90% वापस आ गया है। रोड ट्रांसपोर्ट में ज्यादा चीजें अब चलाई जा रही हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे क्रिटिकल है, सबसे की। और जैसे जैसे फैक्ट्रीज अपने नॉर्मल ऑपरेशंस पे आ जाती हैं, जैसे जैसे रिटेल ट्रेड शुरू होता है, अब दुकानों का खुलना बहुत जरूरी है और लोगों को वहां से जाके खरीदना भी जरूरी है। पैंडेमिक में लोग डर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन जब तक ये डिमांड नहीं आएगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तब तक ये जो साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल डिमांड का बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारी जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं होगी और इसमें टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये एकदम तो नहीं होगा। अब क्रैश जीडीपी ग्रोथ का अगर 24% हुआ है अप्रैल में, जून में, तो उसका जो रिवाइवल है उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। चल रहा है ये, इसमें सिर्फ ये डिबेट चल रहा है कि रिवाइवल जो कहते हैं V शेप रिकवरी होगा कि W शेप रिकवरी होगा।
वी शेप माने कि बिल्कुल एकदम से आपका रिकवरी हो जाएगा, और डब्ल्यू शेप माने कि आपका थोड़ी देर के लिए प्लेटो होके फिर रिकवरी होगा। मुझे लगता है कि ये प्लेटो होके फिर रिकवरी होगा, लेकिन अब आगे वाले दिनों में देखना है क्या होगा। Sushma, you made a remark which I'm holding on to at this point of time, and that was that the huge flows of cheap capital provided by global central banks made heavily discounted stocks attractive. So, should this liquidity be infused at a faster pace into the markets? Should it be held back? What is the pace at which the liquidity be infused by the government? Well, right now we need it to be infused quickly, because given the fact that the data that has come out for the first 3 showed that our economy has been impacted a great deal adversely by the pandemic, and therefore we do need revival in all kinds of ways. And one of these ways is infusion of liquidity in this fashion. So therefore, our country would require it. And I think this is not the time for either the central bank or for the government of India to worry about the fiscal deficit. This is the time for loosening purse strings and for trying to infuse as much money as you can into the system. So engines of growth are governed by 4 factors: expenditure by individual consumers, expenditure by private businesses, expenditure by government, net demand from export minus imports. So I think the last one, the exports minus imports, may not be all that good. How can we infuse provide impetus to the expenditure by individual and the private businesses? In today's scenario, it's the government which is doing most of the expenditure. I think right now you see the government has to take the lead, and I think even in the GDP data which was released yesterday, the positive point is that the government expenditure has gone up by 16%. And in fact, its share in the total, these 4 factors that you're talking about, government expenditure has been much higher than in the past. So this is a positive thing, and the government is the one that has to right now take the initiative. They are the ones who will have to, it is the government which will have to lead the way as far as expenditure is concerned. One is hopeful that they will make a huge infusion into the infrastructure sector. The other option is to perhaps send money directly into the bank accounts of those who have been defined as below the poverty line. This is something that is being done by people in the developed economies of the US and the UK. But we don't have to follow their pattern of giving it to everyone. We can give money, however, to those who fall below the poverty line and who are in dire need just now because of the loss of their livelihoods for various reasons over the last few months. So I think this infusion of funds into the infrastructure sector in a big way, and infusion of funds into the hands of those who are below the poverty line. These are 2 areas where the government can certainly take action as soon as possible. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर तेजी देखने को मिली है। चीन से आए आंकड़ों का अच्छा असर आज एशियाई बाजार पर दिखा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% फायदे में रहा। उधर हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्केई 225 सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए। यूरोपीय बाजारों की रुख करें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.2% नीचे चल रहा था, जबकि फ्रांस का CAC 40 0.5% लाभ में था। जर्मनी का डेक्स भी 0.8% ऊपर कारोबार कर रहा था। The Federal Reserve's commitment to tolerate inflation and keep interest rates low, positive developments in vaccines and treatment for COVID-19, and a rally in tech-focused stocks have helped the S&P 500 and Nasdaq to hit consecutive all-time highs in the month of August.
Yesterday, the Dow Jones Industrial Average declined 0.8% and the S&P 500 fell 0.2%. The Nasdaq Composite Index climbed 0.7%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 73 पैसे मजबूत हुआ, 72 रुपए 87 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 0.25% कम होकर 91.91 पर आ गया। सुषमा जी, रुपए में आज काफी जोरदार तेजी है और 73 रुपए के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ है। 73 पैसे की ही बढ़त यानी मजबूती आज देखने को मिली है रुपए में। क्या मुख्य कारण रहे आपकी नजरों में? देखिए, एक तो वीकनेस ऑफ डॉलर है और दूसरी बात यह है कि जैसे स्टॉक मार्केट्स में भी काफी पॉजिटिविटी रही है लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, वैसे ही रुपए में भी अगर सिर्फ आर्थिक स्थिति पे ही बात होती तो रुपया अब तक काफी गिर जाता ये 3-4 महीने में, लेकिन काफी स्टेबल रहा है। और एक वजह तो जैसे मैंने कहा वीकनेस ऑफ डॉलर रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों की तुलना में भी भारत की जो आर्थिक स्थिति है इतनी खराब नहीं है, काफी बैलेंस स्टेबिलिटी है। सुषमा जी, रुपए पर ही समझना चाहेंगे हम कि रुपए में जो यह मजबूती है, रुपए का कहना लुढ़कना भी दोधारी तलवार की तरह है और मजबूत होना भी, जो वर्तमान स्तर आया है 72 रुपए 87 पैसे का, वह वैश्विक हालात को देखते हुए कैसा दिख रहा आपको? अब ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये स्टेबल लेवल है और ये सबसे अच्छी बात है कि इससे ये अगर बहुत ज्यादा नीचे हो जाता तो हमारे देश में जहां हम इतना ज्यादा तेल की इंपोर्ट करते हैं उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता। हालांकि जब थोड़ा सा हमारा रुपया गिर जाता है उसका फायदा वो जो एक्सपोर्टर्स को है उनको चला जाता है कि उनकी वो चीजें जो कम्पिटिटिव हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफी फायदेमंद है क्योंकि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको उनकी जो कॉस्ट है वो मतलब कंटेन कर देती है ये। Moving on, the oil prices today rose, reversing overnight losses against the backdrop of an equities bull run and a sliding US dollar. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $45.90 per barrel, while WTI crude prices were around $43.10 per barrel. Sushma, in your scheme of things, how much would you be very, very comfortable with the oil prices? This is quite a comfortable oil price for India. Anywhere between $40 and $50 is fine for India. We have factored that into our budget, and of course, right now the budget is in a bad shape because of the fact that our revenues are very low. But basically, this is a fairly comfortable level. Even if it goes up to 50, it's okay. But beyond that is where the government would find it, the exchequer would find it difficult. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य आज 418 रुपए बढ़ा 52,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर चांदी भी 2,246 रुपए बढ़कर 72,793 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूत होकर $1,988 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी बढ़ी है और थोड़ी सी बढ़ी और $28.77 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। सुषमा जी, बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में सोने में निवेश के लिए यह स्तर कैसा है? सोने की बात कर रहे हैं आप? जी जी भाई, इस वक्त तो दाम इसके थोड़े ज्यादा हैं, तो लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है कि ये अभी भी बढ़ेगा, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी उनके लिए उपयुक्त माहौल अभी भी बना हुआ है, अभी भी माहौल अच्छा है इस एसेट क्लास में। वैसे मैं एडवाइस जनरली किसी को नहीं कहती कि गोल्ड में कर। हाँ, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सुषमा। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks return to winning rally after a day's pause and sharp rupee appreciation and positive global cues. Rupee appreciates
73 paise against the US dollar. And gold rises by 418 rupees per 10 grams in the national capital. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. हमारा कार्यक्रम इसके साथ ही समाप्त होता है। अगले अंक में कल आपसे होगी फिर मुलाकात।